Today lab, here we will design the EDFA characterization. And what is mean by EDFA? You know that EDFA means the European Dove fiber amplifier. Here in this lab, we will study that what will be the effect of the distance and the different length. We can check if you want to sweep the length of EDFA, so what will be the effect? The sample file EDFA characterization .ohd, ये एक ये जो लैब है इसका अगर आप इसको कर दिए उसको सेव करें तो इन्होंने इस नाम से सेव किए तो इसलिए कहते हैं कि द सैंपल फाइल a sample file EDFA characterization.ohd show how use the API system design with multiple design version. In this example, we characterize the European Dove fiber amplifier by using sweep for the input parameters of amplifier. So here we will use the sweep parameters for different quantities. For example, we will apply the sweep in the length of EDFA, and it will be from 1 to 20 meter. If the length is 1 meter, then length become 2 meter, 3 meter, up to 20 meter. And the input signal power iteration of دقيقة CW. नेटवर्क مو خراب है आवाज مو कटती है ठीक है मैंने हेडफोन नहीं लगाया अभी थोड़ा क्लियर है So in this lab, we will apply the sweep parameters on these quantities. The length of EDFA and the input signal iteration of the CW laser and power from -40 to 0 dp. And pump power, this is the another laser we will use today. The iteration of the pump laser power from 20 to 200 milliwatt. And we will change the wavelength of the CW laser from 12 to 1525 to 1600 nanometer. And how we will do, so it can be done through this method. And then we will run. So for example, let's design our circuit here. If you want to design the circuit, so you can maximize this by control plus. Then you will see clear. Here I will use the FT system software. In FT system software, there are optical source. These are the two source. One is CW laser. In this lab, we will use two power sources. One is CW laser and one is pump laser. And they will generate a light signal. Here we not communicate any data. We just want that the light emitted by this and this can be flow in optical fiber. So if we vary the length of optical fiber and if we vary the power of this input, so how they will affect. So what is the effect of this parameter?
So you can send the data in one optical fiber by using multiplexer. So you can use 2x1 or you can use ideal. What is the advantages of ideal? So if you use more than some 16 or 32, so you can use ideal WDM. Sir, And what is pump laser? this is just a laser like CW laser, but this is a sinusoidal. This is not a sinusoidal. You see here at this, when the sinusoidal voltage is applied, so it will emit, and uh, they does not apply the sinusoidal. So this is the input power, main input power, and this is for the improvement of this input power. So then we will use the optical fiber library. In optical fiber library, sorry, we will go to amplifier library, optical library, EDFA, and here I will use this. This is the erbium dove. Here its default length is 5 meter. You see there are one input, one another input, there are two output. So if we want to visualize point of view, I will use 1, 2, and dual port. And as the uh, output of this is light, so there will be a light. So we will apply the null point. For null point, we will go to tools, and tool there are optical null, electrical null. So we will use optical null. One moment, sir. This is the diagram which they have made here. There is a CW laser, pump laser. Its frequency is 980 nanometer. They don't know, no need for this. We will change here. And this is the ideal mux. You can use 2x1 mux also. And this is the optical spectrum analyzer for this output. And this is the sorry, we will connect this into this here and here. And what is she?
So this is the diagram. Now I want to sweep the four values. Which one? Which four value? These: length, input signal, pump power, and wavelength. So how I will do this? I will double click on it. We will change the frequency to nano. So it means that this is the wavelength. And then we will convert this into sweep. Power in dB, we will convert this into sweep. And okay. This is for CW laser. For pump laser, we will use the power as sweep. And then it will become okay. And for EDFA, we will use the length as sweep and then okay. So 1, 2, the wavelength and power, third, and the length 4. So you see here length, power, power of pump, and wavelength of CW. So we use the four quantities here as sweep parameters. So and you know that it is how you apply the sweep parameter. So here we apply 20 values. Then these are the four quantities for which we will apply the sweep. The first is length. So spread linearly starting from 1, ending quantity as 20. Okay. This spread linear from 10 to 200. Spread from minus 40 to 0. And wavelength from I forgot 15, 25, 1600. 25, 1600. Okay, these are the four sweeps: length, power, wavelength. Okay, now we will apply the simulation. So all, and then this is one. If you check here, this is the frequency, its gain and noise. Here current sweep ये नहीं, ये देखिए. From here you can see that what is its different value. For example, here we will calculate three values: its frequency, and what is its gain, and what is its noise. कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर गेन कितना है और इसका नॉइज कितना है. ठीक है, समझ आ रही है. ये फ्रीक्वेंसी अगर आप वेवलेंथ, मैंने वेवलेंथ लिया, इधर वेवलेंथ लिया, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 187 पॉइंट समथिंग से बनती है. ठीक है, वो आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम था. आप इस मैथमेटिक्स को अप्लाई करें. सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, मैंने भी इससे कर दी. ठीक है,
सो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। लेमडा तो पहले से गिवन है 1525 से लेकर कितने तक 1600। अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ उस स्वीप आप वेवलेंथ पे मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, अगर आप फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई कर फिर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। कैसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी तो कांस्टेंट है, लेमडा की वैल्यू एक दफ़ा ये लिख ली, एक दफ़ा ये लिख ली, तक साथ टू फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो ये रेंज होगा एक फ्रीक्वेंसी से लेकर दूसरी फ्रीक्वेंसी तक का तक साथ ये आ जाएगा। कहने का इधर मतलब ये है कि अगर आप ये देना चाहते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी, ये देखिए इसका अभी नैनोमीटर ये वाली चल रही है, इसके लिए ये, और इसको अगर आप कन्वर्ट करें फ्रीक्वेंसी में तो इसकी वैल्यू ये होगा। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ये जनरेट करता है, सो और इसका लेंथ कितना हो, ये देखिए 19 मीटर। ठीक है, अगर 19 मीटर हो और ये इस फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल हो तो इसका गेन इतना होगा और इसका नॉइज़ इतना होगा। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करें कहाँ से, यहाँ से लेआउट प्रीवियस, इधर देखिए 18 इसका वैल्यू चेंज हो गया। सो 18 पे अगर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इधर यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप WDM यूज़ करें, WDM, सो इसके वजह से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके वजह से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा इनपुट पावर इतना हो और मेरा जिस जहाँ तक मैं प्रोपगेट करता हूँ उसका लेंथ इतना हो तो मेरा गेन कितना होगा और मेरा नॉइज़ कितना होगा। सो ये आपको शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप इधर देखिए ग्राफ, ये और इधर अगर आप देखिए तो ठीक है, लेकिन मेन आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी, अगर ग्राफ से आप इतना एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं ले सकते तो एग्जैक्ट क्वांटिटी आप यहाँ से ले सकते हैं कि इस वेवलेंथ पे। सो अगर आप इसको क्या करें, लेआउट प्रीवियस कर दें, मजीद प्रीवियस 17 पे, 16 पे तब किधर वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है, इस तरह अगर आप टोटल आ जाएगी, टोटल आने के भी इस तरह कुछ तरीका कार था प्रीवियस। तो 15 मीटर का हो, इसका फ्रीक्वेंसी इतना हो तो गेन इतनी गेन। अभी देखिए गेन इसका क्या होती है, गेन को अगर आप देख लें बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसका लेंथ कम हो जाती है। जब लेंथ कम हो तो इसका फ्रीक्वेंसी और इसका पावर कम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंथ तक लाइट को ट्रांसमिट करना चाहते हो, लाइट सिग्नल, जिसके लिए पावर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपको देखना है। इधर देखिए इसका कम हो इसका, फिर भी आपके साथ इसकी वैल्यू पलटी जाती है। ठीक है, सो सिंपली इसका मतलब ये कि जितना आप ये इसका पावर डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, कि अगर आप ज़्यादा पावर वाली सिग्नल जनरेट करें तो ये ज़्यादा लेंथ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम हो तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप ये देखिए, इसका गेन कम हो जाए जब इसका लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो
इसको अगर आप, ये गेन भी बहुत बड़े गेन है, ठीक है, इस नहीं कि कम है, ये गेन बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप इसके आसपास गेन हासिल करना चाहते हैं अच्छे गेन, इसके लिए इसकी पावर भी आपने इंक्रीज करना होगा। सो टुडे लैब आपको ये शो करता है दैट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द लेंथ एंड द पावर ऑफ द लाइट सिग्नल जनरेटर। सो इसको हमने ये इसका कंक्लूजन हमने ये निकाल लिया कि अगर आप ट्रांसमिशन करते हैं स्मॉल लेंथ तक, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस तक, स्मॉल डिस्टेंस तक, तो इसके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ करेंगे, सो वो तो सेम ऑप्टिकल फाइबर होगा, लेकिन इसके लिए जो आप ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे जो कि लाइट सिग्नल जनरेट करेगा, कैरियर होगा, वही कैरियर की पावर इतनी नहीं होनी चाहिए, लो पावर वाली होनी चाहिए। अगर आप इसको लार्ज डिस्टेंस तक सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी पावर को इंक्रीज़ करना होगा। सो इसको हमने स्वीप पिरामिड के ज़रिए ये कर दिया, ठीक है। So this is all about today class. In today class ये बहुत